बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, एस्पिरेंट्स। इलेक्शन कमीशन के जॉब्स के हवाले से, जो कि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब्स हैं, उस हवाले से पास्ट पेपर्स पे हम फोकस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज हम उसकी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें शामिल होंगे और पास्ट पेपर में चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो हमने इस लेक्चर सीरीज़ में शामिल किए हैं। और इसके अलावा हार्वर्ड अकेडमी एक एक सेक्शन को कंप्लीट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसकी कंप्लीट लेक्चर्स सीरीज़ जो है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की प्रिपरेशन के हवाले से आप हमारा ऑनलाइन कोर्स हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ में ये तो हमारी सीरीज़ जो है, और ये याद रखें कि इलेक्शंस एक्ट 2017 है, लेकिन ये अपडेटेड 2023, या आप ये भी कह सकते हैं कि अभी हम जब बात कर रहे हैं तो ये तब तक अपडेटेड इसका वर्जन है। सो पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन पे फोकस करेंगे। आपने अपने आप को एनालाइज भी करना है, असेस भी करना है कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट। जब तक आपका क्वेश्चन आप उसको समझकर अपना ऑप्शन चूज़ ना कर लें, आप इसको नेक्स्ट मूव ना करें और अपने ऑप्शंस जब आपने फाइनल कर लें तो फिर उसके बाद आप इसको प्ले करें। तो ये आपको शुरू में आपको बताते चलें कि तरीक़ेकार क्या होगा। हो सकता है कि मेरी जो स्पीड है वो फास्ट हो, स्लो हो, लेकिन आपने पहले अपना ऑप्शन चूज़ करना है, तब आपने मूव करना है। वीडियो को प्ले करने के हवाले से बात कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट। ऑप्शन ए, the election rules 2017, the elections act 2017, the elections act 2017, the political parties act 2017। सो आपने अपना ऑप्शन चूज करना होगा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द इलेक्शन एक्ट 2017। Question number 2. To which area does the Election Act 2017 extend? Option A, Punjab only. Option B, the whole of Pakistan. Option C, Federal Capital only. Option D, Sindh and Punjab. Right option is the whole of Pakistan. Question number 3. When did the Election Act 2017 come into force? Option A, after 90 days of its passage. Option B, on 1st January 2018. Option C, at once. Option D, after next general elections. Right option is C, at once. Question number 4. According to the act, who is an alim? Option A, any graduate from madrasa. Option B, a person with 16 years of recognized Islamic education and 20 years teaching research experience. Option C, a mufti without a sanad. Option D, any hafiz Quran. Right option is option B, a person with 16 years of recognized Islamic education and 20 years teaching / research experience. Question number 5. Accredited means, यानी जो accredited है यानी कि जिसको माना जाए, इससे क्या मुराद है? Authorized by the commission. ऑप्शन बी है authorized by parliament. ऑप्शन सी है authorized by local government. ऑप्शन डी है authorized by senate. Right option is authorized by the commission. Question number 6. What does assembly mean in the act? Option A, national assembly only. B है provincial assembly. ऑप्शन सी है national assembly और provincial assembly. ऑप्शन डी है Senate only. Right option is option C, National Assembly or Provincial Assembly.
Question number 7. Asset includes the property of option A, only the candidate, option B, candidate and spouse, option C, candidate, spouse and dependent children, option D, none of these. Right option is option C, candidate, spouse and dependent children. Question number 8. By elections is option A, an election to fill a casual vacancy, option B, a local government election, option C, Senate election, option D, presidential election. Right option is option A, an election to fill a casual vacancy. Question number 9. Who is the commission under this act? Option A, Election Commission of Pakistan, B, Federal Commission, C, Parliamentary Commission, option D, Provincial Commission. Right option is Election Commission of Pakistan. Question number 10. The commissioner means option A, District Returning Officer, option B, Chief Election Commissioner and Acting CEC, option C, Deputy Commissioner, option D, Senate Chairman. Right option is Chief Election Commissioner and Acting Chief Election Commissioner. Question number 11. Constitution means option A, Constitution of Provincial Assembly, option B, Constitution of National Assembly, option C, Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, option D, none of these. Right option is option C, Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Question number 12. A contesting candidate is one who, option A, has withdrawn his candidature, option B, is validly nominated and not withdrawn, option C, is disqualified by commission, option D, is awaiting party ticket. Right option is option B, is validly nominated and not withdrawn. Question number 13. Who is an election agent? Option A, any voter, option B, a person appointed by a candidate as his agent, option C, any government official, option D, a polling staff. Right option is option B, a person appointed by a candidate as his agent. Question number 14. Election expenses exclude option A, gifts during election campaign, option B, loans and deposits, option C, expenditure on circulars, publications, option D, deposit made under section 61 or section 111. Right option is option D, deposit made under section 61 or section 111. Question number 5. An electoral area in rural area means option A, municipal ward, option B, census block or a village, option C, mohalla, option D, polling station. Right option is option B, census block or a village. Question number 16. An election observer is option A media person, option B, a person authorized by the commission to observe election conduct, option C, a candidate's agent, option D, a presiding officer. Right option is option B, a person authorized by the commission to observe election conduct. Question number 17. Election official includes only presiding officer, option B, only returning officer, option C, all election staff and law enforcement officers deputed for election duties, option D, only commission officers. Right option is all election staff and law enforcement officers deputed for election duties. Question number 18.
Who is a returned candidate? Option A, candidate whose papers rejected. Option B, candidate who is declared elected as member. Option C, candidate who withdraw. Option D, candidate who lost election. Right option is candidate who is declared elected as a member. Question number 19. A technocrat mean a person who, option A, holds 16 years education and 20 years post qualification experience with achievement. Option B, any engineer. Option C, a bureaucrat. Option D, any PhD holder. Right option is option A, holds 16-year education and 20 years post qualification experience with achievements. Question number 20. Who is a voter in relation to the Senate? Option A, any Pakistani citizen. Option B, member of National Assembly or Provincial Assembly depending on seat. Option C, any registered voter in electoral roll. Option D, chairman Senate only. Right option is option B, member of National Assembly और Provincial Assembly depending on seat. अब तक जो व्यूअर हमारे साथ हैं वो कमेंट में बता सकते हैं कि उसके 20 में से कितने क्वेश्चंस ठीक थे। होपफुली कि कोई चंद एक ही हमारे साथ होंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। और आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन का कोर्स ऑफर कर रही है, जो कि आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इससे सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।